So once again, welcome to Easy Elite English. Now we were discussing in the last video, and if you have not seen the video, you can see the link in the description box. Math phobia is created unknowingly or knowingly or unwittingly or purposely. It is created by us because we are adopting a hopeless method of teaching. ये भी कहा था कि इसका प्रूफ देंगे, यही फर्स्ट प्रूफ है. एक सिंपल सम 3 2/7 convert into improper fractions. Convert into improper fraction. 3 2/7, a simple sum. Now let us see how we are making it complicated. The solution was simple. ये simple था, easy था. इसको या तो जानबूझकर या without knowing how we made it complicated. इसको सीधा चीज को घुमा घुमा के जलेबी कैसे बनाया गया देखते हैं. यही प्रूफ था. तो ये फर्स्ट प्रूफ. We sent and we will give proofs, and this is the first proof. And this is maybe meant for a class 2 or class 3 or class 4 child. ये कोई हायर क्लास का नहीं है, क्लास 3 या 4 का है. और जानबूझकर इसलिए ये we have given this so that even teachers who are not mathematics teachers, उनको भी समझ में आएगा कि ये क्यों इसे कॉम्प्लिकेटेड किया गया, कैसे कॉम्प्लिकेटेड किया गया, and how not to teach. The video is not how to teach. The video is how not to teach. So let us see, convert into improper fraction 3 2/7. Now this is, now all I have taken from books. ये मैंने कहा था ना, जो बुक लिखने वाले के दिमाग में होता है कि if you want to write something, if you want to write a good book, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही है. अगर सिंपल सा किताब लिखा तो वो किताब का कोई क्वालिटी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड करना है. एंड दैट्स व्हाट द प्रूफ वी आर शोइंग. लेट्स सी द प्रूफ. फर्स्ट बुक देखिए क्या रूल. अब रूल देख के तो आधा एनर्जी खत्म हो गया. खैर कोई बात नहीं. रूल: multiply the denominator of the fractional number with the whole number and add the numerator to the product. The sum is the numerator of the improper fraction. Retain the denominator of the fractional number as the denominator of the improper fraction. This is a rule which is enough to give jitters to anyone. ये मत सोचिए ये बहुत सिंपल है. आपके लिए सिंपल है. Think of the maturity level of an 8-year-old child, of a 9-year-old child. When they write essays in English, जो इंग्लिश में essay लिखता है उसी का 50-60 वर्ड होता है, और ये rule is more than 40 words. This rule has more than 40 words. It's a paragraph. Whereas the actual essays they are writing in English, उसी में उतना ही होता है 40-50 words. तो उनको पूरा एक उनके लेवल के माने अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ये पूरा एक एसे ही रख लिया. और फिर कॉम्प्लिकेटेड देखिए. डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर गया. ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट क्या क्लास 3 के लिए है, क्लास 2 के लिए है, क्लास 4 के लिए है. एंड ऐड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट. ये सम प्रोडक्ट हो सकता है दे हैव लर्नड इट, बट लेकिन ऐसे रूल में सम प्रोडक्ट सब गड़बड़. And then you are saying retain. Retain is not a word for primary level students. Oh, like that, my father is a teacher, my mother is a doctor, we live in India, New Delhi is a capital. इतना ही उनको इंग्लिश मालूम है. retain जो उनके vocabulary में नहीं था.
And when you see the cold words, ये cold है, graphics are welcome, pictures are welcome. When you see these words, black ink में, white paper में, it actually, we call it cold, it is staring at you. And this is enough to give you jitters. And this you start seeing blues because इसका उनको मतलब समझ में नहीं आया. Because half of them don't read like this. हम जैसे पढ़ते हैं ना, हम कैसे पढ़ते हैं? Multiply the denominator of the fractional number with the whole number and add the numerator to the product. अब उनको पढ़ना भी नहीं आता है. अब इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं जहाँ पर neither the teacher nor the headmaster nor the principal knows English. वो तो बिजनेस के लिए बनाया था स्कूल. तो जो रखा है उसको ना इंग्लिश मालूम है ना हिंदी मालूम है, तो वो क्या सिखाएगा? तो they don't even teach proper English. तो multiply the denominator of the fractional number. अब इस तरह से पढ़ा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, तो बगल वाले को भी समझ में नहीं आएगा. Even if an English professor is sitting, वो जिस तरह से पढ़ेगा वो इंग्लिश प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आएगा. Because you never taught them to read. हमने कहा मल्टीप्लाई, और एक बच्चा पढ़ता है, the way we teach them reading के बारे में sometimes we will discuss in another video. Multiply the denominator of the fractional number with the whole number. पढ़ लिया, कुछ दिमाग में घुसा नहीं, because you have never taught them to read. So this 50 words or 40 words paragraph is a meaningless thing. दिखाइए सोनालिया, नेहा, अगर ये नेहा अग्रवाल को दिखाइए, अदिति को दिखाइए, ये निधि को दिखाइए, सोनाली को दिखाइए. अगर बेहोश ना हो जाए तो मुझसे क्या करेगा? They are teaching class 11, 12, BSc, उसको कैसे सिंपल करना है, एंड यहाँ क्लास 2, 3 के बच्चे को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा रहे. You are making things complicated for class 2 and 3. Whereas Neha or Sonali, they are trying to make things easy even for class 11, 12 and BSc. अब उनको ये दिखाए ना, या तो फाड़ के फेंक देंगे, अदरवाइज ये बेहोश होकर चक्कर होकर गिर जाएंगे. And this is how we are teaching. Then ठीक है, एक किताब हो सकता है, it may be that one book was like this. Let us see another book. या सब किताब है, ठीक है, दिखा देते हैं. I promised you that I will bring the proof, and this is the proof. अब इसके बाद और भी प्रूफ आएगा. अब ये और एक नटवर लाल है, and he thought that he would make it very easy. easy करने के चक्कर में और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. He thought that he was making it easy. Step 1, step 2, but actually he made it more complicated. अब स्टेप 1 का पहले स्टेप 2 लिखना है कि स्टेप 3 लिखना है कि स्टेप 1 लिखना है. कोई पहले स्टेप 2 से स्टार्ट किया फिर स्टेप 1 में चला गया. इनफैक्ट व्हेन आई वाज टीचिंग कंप्यूटर, वो होता था ना, हाउ टू ओपन सपोजिंग एमएस वर्ड, वहां आता था स्टेप 1 स्टार्ट ऑन द क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टेप 2 click on the MS Office, click on all programs, then step 3 click on MS. So I used to tell them, ये ऐसा नहीं लिखना है, just write start arrow all programs arrow MS Office arrow MS Word, बस इतना ही लिखना है. If you write step 1, step 2, step 3 and they get confused. और फिर भी कभी then प्राइवेट ट्यूटर होते हैं, बहुत फेल किया हुआ, क्लास 10 फेल किया हुआ प्राइवेट ट्यूटर मिलता है, तो आप वो वही सिखाया जैसे किताब में स्टेप 1, स्टेप 2. तो what the child wrote was step 1 click on all programs, step 2 click on MS Office, step 3 and लास्ट में भूल गया था, लास्ट में लिखा then click on start button, because the thing was meaningless for them. It was just a set of nonsense words. I remember when Jyoti Basu was the chief minister of West Bengal, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था meaningless words in faulty English. That is exactly what it is. Meaningless words
with a faulty planning, and that's what you are teaching the children. क्यों मैथ्स फोबिया नहीं होगा? ऐसे एक सिंपल चीज के लिए आप एक essay of 40 or 50 words ऐसे ही फोबिया हो जाएगा. Then let us see what another teacher did. He gave a formula. A formula तो खैर क्लास 10 में होता है, क्लास 12 में होता है, क्लास. अब ये फॉर्मूला निकाल दिया. डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. अब ये फॉर्मूला देख के तो खैर आधा बच्चा बेहोश हो गया और आधा बच्चा भाग गया. ये फॉर्मूला उनका समझ में आएगा और क्या कहना चाहता है वही समझ में नहीं आया. For you it may be simple. Think in terms of class 2 and 3 children, 8-year and 9-year-old children. ये formula, it doesn't enter their head. This into this plus this by this is something like x into y plus z. अब उनको समझ में क्या आएगा? Because we are choosing methods which we think to be very simple, but at the child's level it is complicated. Not because the child is not intelligent. ये मत सोचिए कि child intelligent नहीं है. Child तो हमसे भी ज्यादा intelligent है. हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है. किसी से भी पूछ लीजिए, यूट्यूबर से जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, सोनाली से पूछिए, नेहा अग्रवाल से पूछिए, पारुल इंग्लिश लैब से पूछिए. दे नो दैट समटाइम्स द चिल्ड्रन आर इवन मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट वी आर. लेकिन ये मैच्योरिटी लेवल, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स द क्वेश्चन ऑफ मैच्योरिटी लेवल. इफ द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका मैच्योरिटी लेवल कम है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि वी आर मोर इंटेलिजेंट, ओनली आवर मैच्योरिटी लेवल इज हायर. अदरवाइज चाइल्ड का इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस से 10 गुना है. So this is what they give. See the formula which was meaningless for them. This into this plus this by this. अब उनको क्या समझ में आएगा? So what we do, how can we make it simple? ये तो मैंने कहा था, why we make it complicated? Either we give a 50 words rule, which is a paragraph, which is an essay for them. क्लास 2-3 लेवल के लिए दैट इज एसे. वो एसे राइटिंग करते हैं ना इंग्लिश में, उनका एसे उतना ही होता है, 45-50 वर्ड्स. एंड वो रूल है 45 और 50 वर्ड्स. देन यू गिव अ फॉर्मूला. क्लास 7-8 में व्हेन यू टीच फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, तब उनको समझ में नहीं आता है. तो क्लास 2 लेवल, डू यू थिंक दे विल अंडरस्टैंड फॉर्मूला? एंड द क्लास 7 and 8 level, when you tell them formula 2 multiplied by length plus breadth equal to perimeter, that half of the students can't understand. And you are expecting a class 2 student, an 8-year-old child, to know this formula. So, black words, words written on white page with black ink, they are just a horror. ये horror है. Black ink say whatever you are writing on white page, that is simply a horror. And if you force them, it is a torture. They need graphics. Well, graphics enters the mind. The words will not enter the mind. Because their level is, English में क्या level है? My father is a doctor. I live in Mumbai. Yesterday I went to my friend's house. This is the level of English. And you are teaching them this one. So, how actually we will, our एक story है, one smart board. Smart board, they came to sell smart board in my school. And my school means not my school, the school where I was working. वो भी torture था for 20 years. Because it was a horrible school. But then I had to work. So, वहाँ स्मार्ट बोर्ड बेचने आया. मतलब देखिए, केजी का क्लास के लिए बहुत अच्छा है. मतलब क्या अच्छा है भाई? देखो, दिखा, डेमो करो. एच कैसे लिखना है? ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, leave 2 centimeter gap, draw another vertical line, then draw a horizontal line joining the two.
ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इतना जो बच्चा समझता है वो एबीसीडी सीखेगा. Will the child be learning ABCD if the child can understand horizontal line, vertical line, 1 centimeter apart, then join the two? If the child can understand this, would the child be in KG and class 1? Would he be nursery? Would he be learning ABCD? वो ABCD सीखेगा जिसको horizontal और vertical line मालूम है. ये these are the educators. कहाँ से भाई डिग्री लेके आ गया, and then they are retained. अब क्यों, अब स्कूल में you can ask why they then accept these things. आंसर आपको मालूम है. Many of the schools, or most of the schools, जो किताब है, जो स्मार्ट बोर्ड है, जो फैसिलिटी है, that is not for the child to learn, that is for the authorities to get commission. किताब जो होता है वो आपके बच्चे के लिए नहीं है, वो अथॉरिटी को कितना कमीशन मिलता है पब्लिशर से उसके लिए. ये जो बेचेगा कितना कमीशन देगा, कितना ब्राइब देगा, उसके लिए. ये बच्चे के लिए सीखने के लिए नहीं था. इट वॉज नॉट मेंट फॉर द चाइल्ड टू लर्न, इट वॉज मेंट फॉर द कमीशन विच द अथॉरिटीज वुड गेट. तो जितना घटिया क्वालिटी उतना ज्यादा कमीशन. दैट्स व्हाई सब स्टैंडर्ड बुक्स आर सो मच इन डिमांड. कमीशन ज्यादा मिलता है, बच्चा जाए भाड़ में, हमको तो कमीशन चाहिए, स्कूल तो बनाए इसलिए है. सो दिस इज हाउ, एंड all the elements are actually against the child. वह स्कूल में तो वो कमीशन का धंधा में है. टीचर्स, 50% of the teachers, they don't even know proper English. बहुत सा स्कूल में, I'm not saying in all the schools. Then at home you are pressurizing the child. So actually the child is at the receiving end from all the directions. हमारे स्कूल में होता था, we had where I work, we used to have headmasters जो इंग्लिश में एक सेंटेंस भी लिखना नहीं जानता. वो क्लर्क लिखता था एंड दैट वाज फुल ऑफ मिस्टेक्स, अब वही साइन कर देता था, उसको कुछ मालूम ही नहीं है. ऐसा प्रिंसिपल है. बिकॉज वी यूज्ड टू हैव, माने ऐसा प्रिंसिपल है भाई. एक प्रिंसिपल तो मार खा के भाग गया, स्टूडेंट्स ने मार दिया उसको, पेपर में भी आया था. और एक था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसा हुआ है. खैर वो पैसा देके रिलीजियस माइनॉरिटी ये वो केस दबा हुआ है, बट दे आर इन वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में है. वो गरीब का घर बनाता था, रोज स्टूडेंट से बोलता था गिव मी 1 रुपी. 1 रुपी कलेक्शन चलता था सवेरे, और गरीब का घर शाम तक बन जाता था, क्योंकि उस पैसा से दारू का बोतल आता था. दारू का बोतल पीता था, जितना कलेक्शन किया उससे दारू का बोतल आया, दारू पिया, सो गया, हो गया गरीब का घर. ये गरीब का घर बनाता था. So these are the types of schools you are sending your child to. ये कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है भाई, जहाँ पर स्टैंडर्ड टीचर्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है. ये सब बिजनेस हाउसेस है. और यहाँ पर ये इस तरह का किताब बेचने वाले भी बिजनेस करते हैं. दे आर आल्सो डूइंग बिजनेस. दोज हु आर सेलिंग स्मार्ट बोर्ड्स, दे आर आल्सो डूइंग बिजनेस. कोई बात नहीं, सब माने ऑल आर इन द गेम. जाता तो चाइल्ड पर प्रेशर है और पेरेंट्स का पैसा जाता है, बाकी सबको तो लाभ ही लाभ. So this is the reason why the books are making it complicated. The child did not need a verbiage or verbose explanation. Words को minimize करना है. More the number of words, the less the child understands. More the number of words. आपने सिखाया area equal to length into breadth, कुछ समझ गया. If you say area of a rectangle is given by the product of, वो कुछ नहीं समझेगा, because you are using more number of words. जैसे number of words ज्यादा हुआ, अंडरस्टैंडिंग कम होता गया. They need graphics, they don't need words. For instance, this is one method. ये नहीं कि this is not the only method, just we are showing one method how with minimum verb, minimum explanation, minimum, don't use paragraphs, don't use sentences, use simple words. So here we have given a graphic representation. This is one of the methods.
I'm not saying this is the only method. This is one of the methods. The child has to learn only two things, multiply and add. The child learns only two things, multiply and then add. These are the only two things the child learns, only two words. And he sees the graphics from where to start, where to multiply and where to add. And before that, he copies the denominator. Retaining, copy, they understand the word copy. Copy the denominator, retain, fit in. And now multiply, add. We don't even say first you multiply, then you add. नहीं, इतना word नहीं है. Multiply, comma, add. Multiply, comma, add. We just use two words and show them graphically. Multiply, then add. Again, the second sum, multiply, add. That's all we are showing. And when the child is doing the sums, let this be on the board. ये board में बड़ा से लिखा रहेगा. It will be on the board. They will see it and do it. Where to multiply, where to add, where to multiply, where to add. Board में रहेगा. In front of them, the picture should be there. They see the picture and do it. If it is necessary, you give the picture in exam. Exam में भी दे दो, कोई problem नहीं है. बाद में तो सीख ही जाएगा. So when you give the graphics with just two words, multiply, add, and it is in front of them with this picture they are doing, just let them do 4 or 5, उसके बाद वो perfect हो गया. And they don't, अब कोई गलती नहीं करेगा. हो गया काम खत्म. So actually, that's what we said. Instead of this simple graphics where you needed two words, multiply, add, multiply, add. What we did? First we said this one. First we said this one, convert into improper fraction. First give a formula, which was absolutely rubbish at that level. नहीं तो और भी भयानक है, even more horrifying, terrifying. Step 1, step 2, step 3, step 4. अब बोलो step 5, step 6. और नहीं तो a paragraph. And the paragraph is as big as their essay. Class 1, 2 का essay इतना ही 40-50 words होता है. And that is what you are teaching them as a rule. और इतना 50 words अगर learn किया, उनको तो मालूम भी नहीं है. Because as I told you, we never teach them to read properly. We don't say multiply the denominator of the fractional number. ये नहीं. They read multiply the denominator of the fractional number with the, and nothing enters the head. And it's a paragraph. By the time they read, the energy is finished. समझा तो नहीं है, nothing entered their head, but even the reading was an effort. The moment they read through the paragraph, उसका energy खत्म. And you are expecting the child to understand. So neither the rule consisting of 50 words or 45 words, not the step 1, step 2, step 3, step 4, this type of stepwise is even more terrifying. And then we have a formula which is absolutely rubbish and meaningless for them. And once, and this is not the only thing, this is what we are teaching. And we are saying maths phobia. Maths is difficult. Maths is horrible. A maths so horrible होगा ही. You have made it horrible. It was not horrible. You have made it horrible. You have made it terrifying. वो unwritten rule I was saying about. किताब लिखना है तो उसको complicated करना है. Rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Each rule consisting of 20 to 30 words. ऐसे chart to rule 100 words. And if you learn that 100 words, and in case you are able to understand, हाँ exam में एक number मिलता है. And then you call why the child is afraid of mathematics. This is the reason. We have been teaching it in the wrong way always. Because we are prescribing the books. The school, your school is prescribing the book. Most probably, in most of the cases, particularly the
flourishing, mushrooming English medium school, not for the child to learn, but for the commission they get. And जितना घटिया किताब उतना ज्यादा कमीशन. जो नौकरी में कौन ब्राइब देता है? सबसे ज्यादा ब्राइब वही देगा जो सबसे कम क्वालिफाइड. So this is, we try to replace with graphics, try to have minimum words. That's why I said don't even say first multiply and then add. Kuch nahi. Multiply, add, and the graphics is in front of them. ये जो graphics pattern, we have shown it by picture. The picture board में रहेगा when they are doing the sum. ये don't erase it. ये रहेगा उनके sum. And then they will see the graphics and do it. It was a simple thing which we made it complicated through rules and formula. That was Easy Elite English Educational Trust. WhatsApp us or email us. We'll come back with more videos. Till then, thank you and goodbye.